Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So as you can see, आज का intro video थोड़ा different है मेरी regular normal video से. That is because I really wanted to share something with you guys. So it's been a while. कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा negativity and anxiety हो रखी है. I was like इतना सब कुछ हो रहा है, क्या मैं इस बीच YouTube पे videos upload करूँ? मुझे ethically वो सही नहीं लग रहा था. And I was in dilemma for like 10 days and finally I came to a conclusion that art is something जिसने मुझे हमेशा help किया है stress free होने से and अपना काम ना lose होने से. So whenever I feel stressful or anxious, I just grab my brushes and I start painting. So I have a little suggestion for all of you who are sitting at home or who are working from home, और आप में से काफ़ी लोग अपना क्वारंटाइन पीरियड भी कर रहे होंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पेंटिंग आनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हर पेंटिंग का एंड प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए. आर्ट इज़ अ थेरेपी. सो आपको अगर पेंटिंग नहीं भी आती है, जस्ट ग्रैब योर ब्रशेस, ग्रैब योर पेंट्स एंड स्टार्ट पेंटिंग. आई होप किसी ना किसी वे में ये वीडियो आपको इंस्पायर करे अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट करने से. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरी चैनल को या मेरी वीडियोस को देखकर ही कुछ रिक्रिएट करो या इंस्पायर हो. आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर सको. एंड या so coming back to the video, in this video I decided to paint Shivji and Parvati Mata. I hope you all will like it. So yeah, without wasting any moment, let's start the video. ओके गाइज, सो दिस इज़ द कैनवस पैड जो आई गेस मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर एक्रेलिक पेंटिंग वीडियो में यूज़ किया है. आई बॉट दिस पैड फ्रॉम Amazon एंड आई एम सुपर हैप्पी विद इट्स क्वालिटी. एंड नाउ आई क्विकली स्टार्ट स्केचिंग लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ, बिकॉज आई एम श्योर जितनी एक्साइटेड मैं हूँ आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे. ऑल्सो गाइज, इससे आप लोगों के लिए ईजी हो रिक्रिएट करना, इसलिए मैंने ट्रेसेबल स्केच को लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. एंड येस, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड इट एंड स्टार्ट क्रिएट. Once I'm done with the sketching part of it, now I'll quickly start painting. So yes, skin color के लिए मैं use कर रही हूँ white, yellow, red and black acrylic paint. Yes, look at this, कितना perfect skin color बनाएंगे. Once I'm done with the skin color, now I'll quickly prepare शिवजी and पार्वती माँ के बालों का color. उसके लिए बस मैं black color और red color का use थोड़ा ज़्यादा करूँगी. And I'm quickly gonna complete this. Look at this, कितना perfect brown color बनाएंगे. And now comes the background. And yes, we all know the technique. For background, I'm using turquoise and white color and yellow color and magenta. So basically, if you're following my channel, आपको पता है मुझे colorful चीजें कितनी ज़्यादा पसंद है. So yes, मैं उसी चीज को ध्यान रखते हुए colors से अपनी background को भर दूंगी. I don't know why, I think जब भी ज़्यादा colors होते हैं तो अपने आप painting attractive हो जाती है. At least मुझे तो लगती है. Comment down below what do you think? आपको painting में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लगती है. सो येस, वंस दैट इज डन, आई एम स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विद द बैकग्राउंड एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एडिंग मोर एंड मोर लेयर्स ऑफ कलर्स. एंड येस, look at this, कितना beautiful लग रहा है ये. Once that is done, now I'm finally satisfied with the background. And now comes the other elements, which are the ornaments. And for ornaments, I'm adding white, येलो एंड रेड कलर. एंड लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल कलर बना है ये. अब मैं क्विकली इसे कलर करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट बेस कंप्लीट हो चुका है. बस स्नेक रहता है. एंड फॉर स्नेक आई एम यूजिंग ग्रीन कलर विच आई हैव प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग येलो, व्हाइट एंड ब्लू कलर. सो यस, वंस दैट इज ऑल्सो डन, आई विल क्विकली कंप्लीट द रुद्राक्ष की माला. नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, विच इज आउटलाइनिंग द होल पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टिप राउंड ब्रश. एंड मैं कलर यूज कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक. सो यस, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. एंड एक अलग ही जान आ गई है. नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, विच इज डेप्थ क्रिएट करना एंड शेड्स ऐड करना. पर्सनली मुझे ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एंड फन पार्ट लगता है पेंटिंग का. सो वंस आई एम डन विद द आउटलाइनिंग पार्ट ऑफ इट, नाउ आई क्विकली कॉन्सेंट्रेट ऑन दी शैडोज. मैं हर एलिमेंट में ट्राई करूंगी शैडोज शो करने का. दैट इज वन ऑफ द रीजंस पेंटिंग में एक अलग सी जान आती है. सो जो भी कलर्स मैंने फर्स्ट बेस पे अप्लाई करे थे, मैं उन्हीं का डार्कर शेड यूज करके शैडोज क्रिएट करूंगी.
सिमिलरली मैं अब हाईलाइट्स शो करूंगी लाइट कलर को यूज करके। हियर आई एम मिक्सिंग व्हाइट एंड येलो एक्रेलिक पेंट एंड लुक एट दिस, में जो भी मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे हाईलाइट करते हुए दिखाना है मैं वहां पे इन्हें मर्ज कर दूंगी। एंड लुक एट दिस गाइस, इट इज लुकिंग सो प्रिटी। मैं लाइटर टोन्स का यूज करके थोड़ी और डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। नाउ आई विल क्विकली ऐड चंदन का टीका एंड अब मैं फटाफट शिव जी का त्रिशूल भी बना रही हूँ बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फाइनली गाइस, ऑलमोस्ट हमारा कंपोजिशन तो कंप्लीट हो चुका है। जितनी ज्यादा डिटेलिंग्स होंगी उतना ब्यूटीफुल लगेगा। तो एज वी ऑल नो दैट शिव जी को नील कंठ भी बोलते हैं, इसलिए मैं उनके गले पे ब्लू कलर का पैच लगा दिया है। एंड यस, वंस दैट इज ऑल्सो डन, मैं जो भी थोड़े ब्लैंक एरियाज है, थोड़ा जो मुझे खाली लग रहा है एरिया, मैं वहां पे फटाफट कलर्स ऐड कर दूंगी। सो यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिक्रिएटेड पीसेस विद मी। आई वुड लव टू सी योर पेंटिंग्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी ये पेंटिंग, एंड अगर आपको अच्छी लगी don't forget to like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon as well because अगर मेरी new video आएगी और आपको पता नहीं चलेगा तो क्या फायदा। So yeah, I'll quickly add few more shadows. Shadows से एक अलग ही जान आ जाती है। And look at this, this is looking so beautiful. छोटे छोटे ये जो elements होते हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाता है पेंटिंग में। And yes, इसी के साथ हमारी पेंटिंग almost finish हो चुकी है। So yes, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you are planning to recreate this painting, don't forget to tag me on my Instagram handle which is shivangi.sa. I would love to see your pieces. ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। I'll see you in the next video. Also guys, if you have any suggestions for my next video, do comment down below and please थोड़ा जल्दी comment करके मुझे जल्दी से बताना. Till then, take care, stay safe.